भवन के मुख्य सभागार से मैं शुएब खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल का 20वां अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये समारोह सम्मान है उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य एवं बलिदान का जिन्होंने दुनिया के समक्ष बल के साथ देश का मस्तक गर्व से ऊंचा रखा है। उन पराक्रमी सीमा प्रहरियों की संख्या हजारों में है जिन्होंने वीरता के जीवंत कीर्तिमानों की स्थापना की है। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इन सीमा प्रहरियों को अलंकृत करेंगे और साथ ही रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान का भी आप देंगे। सीमा सुरक्षा बल ने विगत 58 सालों में अपने गौरवशाली सफर के दौरान न सिर्फ सीमा रक्षण में बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। इस दौरान बल ने स्वयं को पेशेवर एवं विशिष्ट बल के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति होने का गौरव हासिल किया है। कौशिक। Namaskar, good morning and welcome to this very special broadcast from the plenary hall of the Vigyan Bhavan, where the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, will be giving away the BSF Investiture Awards, and he will also deliver the Rustamji Memorial Lecture 2023. Till 1965, India's borders with Pakistan were manned by the State Armed Police Battalion of Gujarat. On the 9th of April 1965, Pakistan attacked Sardar Post, Charbet and Beria Bait in Kutch district of Gujarat. This exposed the inadequacy of the state armed police to cope with armed aggression, due to which the government of India felt the need for a specialized centrally controlled border security force which would be armed and trained to man the international border with Pakistan. And that time it was West Pakistan and East Pakistan, and now the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, has arrived at the plenary hall, and he has been accompanied by the DG BSF, Shri SL Thausen, and the additional DG BSF. राष्ट्रगान में शामिल हों। और अब राष्ट्रगान होगा। माननीय उपराष्ट्रपति कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में पधार चुके हैं और अब सीमा सुरक्षा बल का 20वां सर्वविदित है कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुआयामी बल है। उनके साथ सीमा जिसे आज हम सभी दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल का वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जी बिल्कुल शुएब, and as we were speaking, initially in 1965 the BSF or the Seema Suraksha Bal was raised with 25 battalions, and with the passage of time has now expanded as per the requirement of the nation to fight against militancy in some of the states and the northeastern part of India. At present, BSF is holding 192, including 3 National Disaster Rescue Force battalions and 7 BSF artillery regiments are guarding the international borders with Pakistan and Bangladesh. In addition, BSF is also performing anti-infiltration role in the Kashmir Valley, counter-insurgency in northeastern region and anti-Naxal operations in Odisha. And now a sapling has been presented by the DG BSF to the Honorable Vice President of India. माननीय उपराष्ट्रपति को पौधा भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है मुख्य सभागार में विज्ञान भवन में, जहां आयोजित हो रहा है 20वां अलंकरण समारोह सीमा सुरक्षा बल का। माननीय उपराष्ट्रपति इसको स्वीकार कर अपना स्थान ग्रहण करते हुए
And the BSF also plays many roles, and one of them is human assistance and disaster relief. And now the Director General Border Security Force, Shri Sujoy Lal Thausan, will present the welcome address. 20वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशकगण, सीमा सुरक्षा बल के उपस्थित सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, विशिष्ट अतिथिगण, साथी अधिकारीगण, सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय उप राष्ट्रपति महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। मुझे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, जो हमेशा ही सीमा सुरक्षा बल के लिए मार्गदर्शन के स्रोत रहे हैं। आज यहाँ आपकी उपस्थिति हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति आपके अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है और आपको अपने बीच पाकर हम सभी सीमा प्रहरी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 20वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान सीमा सुरक्षा बल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के साथ साथ हमारे जवानों की बहादुरी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को पहचान देने का भी एक अवसर है। बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं की रक्षा और हमारे नागरिकों के सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए अनवरत प्रयास रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल समृद्ध विरासत वाला एक गौरवशाली सीमा रक्षक बल है, जो 5 दशकों से अधिक समय से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। वर्षों से इस बल ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अटूट साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है। आज सीमा सुरक्षा बल दुनिया के सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमेशा अग्रणी रहा है। इस अवसर पर मैं बल के स्थापना से लेकर आज तक उन सभी 1958 अमर प्रहरियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारे जवानों ने अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, तस्करी और अवैध गतिविधियों सहित कई चुनौतियों का सामना किया है और हमेशा विजयी हुई है। आज का अलंकरण समारोह हमारे उन बहादुर तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों और जवानों को पहचानने और अभिनंदन करने का एक अवसर है, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये पदक उनको राष्ट्र की सेवा के लिए उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान आज के समारोह के एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्याख्यान सीमा सुरक्षा बल के प्रथम महानिदेशक स्वर्गीय के.एफ. रुस्तम जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, जिन्होंने बल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्याख्यान सीमाओं के सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और बल के सामने आने वाले चुनौतियों को उजागर करने का एक शुभ अवसर है। सीमाओं की सुरक्षा एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल हमेशा से देश की सीमाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहा है और हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीमावर्ती नागरिकों के बीच सद्भावना बनाने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल ने कई पहल की है, जिसमें चिकित्सा शिविर, शैक्षिक कार्यक्रम, खेलकूद इत्यादि का आयोजन शामिल है। हमारा मानना है कि
क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीमावर्ती नागरिकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना आवश्यक है। सीमा सुरक्षा बल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी एवं मॉडर्नाइजेशन को अपनाने में भी सबसे आगे रहा है। सीमा सुरक्षा बल समय के साथ बदलती चुनौतियों के अनुसार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेशनल क्षमताओं को निरंतर बढ़ा रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल में हमने पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं में बहुत बड़ी संख्या में आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में कॉन्ट्रबैंड आइटम्स भी जब्त किए हैं। ड्रोन को लेकर हमेशा से हमारे प्रोएक्टिव पॉलिसी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहादुर सीमा प्रहरी ने विगत 1 वर्ष में 33 ड्रोन को गिराकर भारी मात्रा में हथियार एवं मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस अवसर पर मैं अपने सीमा प्रहरियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ सेवा की है। मैं अपने प्रहरियों के परिवारों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उनकी ड्यूटी के दौरान उनके साथ दिया है। महोदय, आज के इस अलंकरण समारोह में 2 वीर सीमा प्रहरी को बहादुरी के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही हमारे 33 सीमा प्रहरियों को और सेवानिवृत्त कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः श्री जगदीप धनखड़ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय BSF। That was the Director General of the Border Security Force, Dr. Sujailal Thausen, who delivered the welcome address, and he also listed out the various achievements of this premier Central Armed Police Force and the CAPF, which is playing a yeoman role in protecting our frontiers both at the western and eastern borders. सीमा सुरक्षा बल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सुजयलाल थौसन, जिन्होंने स्वागत उद्बोधन किया, और अब सीमा सुरक्षा बल की शौर्य और पराक्रम पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में। Now a documentary on the salient features of BSF is being presented. ये शौर्य गाथा है भारत के उन वीर बालाओं की जो राष्ट्र रक्षा में खुद को समर्पित कर और भारतीय की सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए भारत की सीमाओं पर सीमा भवानी बनकर तैयार। जिन्हें देख काल में घबराए सीमा पार दुश्मन भी दहशत से कांप जाए। राष्ट्र के सशक्तिकरण का परिचय पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास रचती ये महिलाएं हमारे देश की गौरव है। सीमा सुरक्षा बल में वैसे तो महिलाएं बल के स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद से विभिन्न गैर लड़ाकू जिम्मेदारियों का बेहतरीन निर्वहन कर रही है, परंतु सन 2008 का वो ऐतिहासिक क्षण था जब सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं को लड़ाकू रोल में भी भर्ती किया जाने लगा। और आज हमारे पास 7,000 से भी ज्यादा महिलाएं विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन गौरव के साथ कर रही है। आज हमारी महिला प्रहरियों की तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तख्ते रेगिस्तान तक, वो सीमाओं पर सुंदरबन की भूल भुलैया से लेकर गुजरात के रण तक मुस्तैदी से तैनात है। आज सीमा सुरक्षा बल की शायद ही कोई ऐसी जिम्मेदारी हो जिसे हमारी महिला प्रहरी नहीं निभाती। इन सभी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए महिला प्रहरियों को कई कठिन और मुश्किल प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के साथ ही शुरू होता है इनका बुनियादी प्रशिक्षण और उसके बाद कई प्रकार के विशेष प्रशिक्षण जो लगातार समय के साथ इन्हें व्यावसायिक निपुणता और जरूरी कौशल प्रदान करते हैं। कड़ी मेहनत और मुश्किल हालातों से लड़ने के इनके जज्बे ने किसी से
ऐसा ही एक और ऐतिहासिक क्षण सन 2016 में आया जब सिर्फ महिला प्रहरियों के एक मोटरसाइकिल सवार दस्ते की स्थापना की, जिसे दुनिया आज सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम के नाम से जानती है। इसी टीम ने सन 2018 और 2022 के गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर हेल्प एंगेज स्प्रिंट दिखाकर समारोह के मुख्य अतिथि सहित उपस्थित जन सैलाब को मंत्रमुग्ध किया। सन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 5,300 किलोमीटर की सौर एक्सप्लोरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। विश्व प्रसिद्ध अटारी बाघा रिट्रीट समारोह में भी हमारी महिला प्रहरियों ने अपनी भागीदारी से एक अनूठा उदाहरण पेश किया। ये महिला प्रहरी जब इस बेहतरीन परेड में कदम ताल करती हैं तो वहां उपस्थित दर्शकों को रोमांचित करते हुए भारत की सशक्त महिलाओं के बुलंद हौसलों को गुंजायमान करती हैं। इस परेड में महिला प्रहरियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बोल्ड ड्रिल भी अद्भुत आकर्षण का केंद्र होता है। सन 2023 के गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर इन महिलाओं ने इतिहास रचते हुए पहली बार पुरुष सीमा प्रहरियों के साथ प्रसिद्ध ऊंट सवार दस्ते का हिस्सा बने। सजे धजे ऊंटों पर सवार ये महिला ऊंट सवार दस्ता दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अतिरिक्त आज सीमा सुरक्षा बल में महिला प्रहरी विभिन्न प्रकार के खेल स्पर्धाओं सहित योग और प्रदर्शन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बल और देश को गौरवान्वित करते हैं। जो डरे नहीं बाधाओं से, जो डिगे नहीं मुश्किल राहों से, प्रतिपल जो गुंजित है राष्ट्र की वीर गाथाओं से, नमन करें उस शक्ति को जो बन सीमा पर सीमा भवानी है, सीमा भवानी है। That was a documentary on the Border Security Force and it also described the various roles this premier border guarding agency of India plays in securing our frontiers, and also other aspects like providing medical help to the local residents and other things. And now the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, will present the awards to the BSF personnel and officers, and this time shows the police medal for bravery is being presented to two men of the Border Security Force, Constable, now Head Constable Sundar Singh of the 44th Battalion, and he has shown exemplary courage and dedication while on border guarding duty at the Bangladesh border, and he is being presented with the police medal for bravery by the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. आपको बता दें कि वीरता के लिए पुलिस पदक इस बार 2 लोगों को दिया जा रहा है। 1 मार्च 1951 को प्रारंभ वीरता के लिए पुलिस पदक पुलिस बलों और संगठित अग्निशमन सेवा के उन सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उल्लेखनीय शौर्यपूर्ण सेवाएं प्रदान की है। इस अलंकरण ने वीरता के लिए भारतीय पुलिस पदक का स्थान लिया है। पहला पदक दिया जा रहा है मुख्य Constable Anand Oraon of the 153rd Battalion is being presented with the police medal for bravery, and he is a brave constable of the Border Security Force, and round of applause. And the Honorable Vice President of India also congratulating Constable Anand Oraon. Head Constable Sundar Singh, 29 जनवरी सन 2021 सीमा प्रहरी सुंदर सिंह ने भारत बांग्लादेश सीमा की मुख्य आरक्षक सुंदर सिंह को दिया जा रहा है, जो कि 44 बटालियन में कार्यरत है।
माननीय राष्ट्रपति बहादुर प्रहरी श्री सुंदर सिंह ने सुंदर सिंह को ये पदक प्रदान करेंगे। घायल होने के बावजूद इस बहादुर प्रहरी ने संघर्ष जारी रखा और अपने पराक्रम से उन आपराधिक तत्वों को भागने पर मजबूर कर दिया और उनमें से एक को सुंदर सिंह ने अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए धर दबोचा। इस बहादुर प्रहरी के साहस की बदौलत सीमा पार के एक असामाजिक तत्व सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया जा सका। बहादुर प्रहरी सुंदर सिंह के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह। माननीय उपराष्ट्रपति के सामने मेडल उनके सीने पर लगाते हुए और अब सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक, एक अलंकरण उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जो अब तक के अपने कार्यकाल में अपने प्रशंसनीय कार्यों के लिए अनेकों बार सम्मानित होते रहे हैं और आज इनकी लंबी प्रशंसनीय व सराहनीय सेवा के सम्मान में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है। इस सम्मानपूर्ण पदक को प्राप्त करने सबसे पहले आ रहे हैं श्री संदीप चानन, डीआईजी। The Honorable Vice President, presenting the Police Medal for Meritorious Service to Shri Sandeep Chanan, Deputy Director General Shri of Kamaljeet Singh, BSF. DIG. And now Shri Kamaljeet Singh, Commandant. Now इससे पूर्व श्री कमलजीत सिंह यूएन मिशन के दौरान शांति बहाली के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। the Vice President, presenting the Police Medal for Meritorious Service to Shri Kamaljeet Singh and also congratulating him for श्री संजय कुमार, Commandant. award. Shri Sanjeev Kumar, Commandant, will receive the Police Medal for Meritorious Service from the Honorable Vice President of India, and the Honorable Vice President penning the medallion and also presenting him with the citation for Police Medal for Meritorious Service. And shows the Honorable Vice President is also exchanging a few words with each of the awardees. श्री दिवाकर कुमार, Commandant. माननीय उपराष्ट्रपति उनके कार्य की सराहना भी साथ साथ करते हुए मेडल के साथ साथ इससे पूर्व श्री दिवाकर को प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक तथा यूएन मिशन के दौरान उल्लेखनीय कार्यों के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से भी अलंकृत किया जा चुका है। दिवाकर कुमार को माननीय उपराष्ट्रपति ने ये श्री वीरेंद्र पाल सिंह, Commandant. Shri Virendra Pal Singh, he is also the Commandant, and he is receiving the Police Medal for Meritorious Service from Honorable Vice President of India, who has now pinned the medallion onto the uniform of Shri Virendra Pal Singh and has also presented him with Shri the Vipin Kumar citation. Yadav, Commandant. Shri Vipin Kumar Yadav, he is from the second company. श्री and he विपिन is, कुमार Commandant आतंकवाद of के that. विरुद्ध अपने साहसिक कार्यों के लिए पराक्रम पदक से भी अलंकृत हो चुके हैं। The Honorable Vice President presenting the citation to Shri Vipin Kumar Yadav and also श्री exchanging राजेश कुमार यादव, Commandant. राजेश कुमार यादव द्वितीय कमांडाधिकारी हैं, उनको माननीय उपराष्ट्रपति इस मेडल से अलंकृत करते हुए और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र माननीय उपराष्ट्रपति प्रदान करते हुए
श्री संजीव कुमार, कमांडेंट। कमांडेंट संजीव श्री कुमार। संजीव यूएन मिशन के दौरान अपने प्रशंसनीय कार्यों के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से विभूषित हैं। He was also conferred with the UN Peacekeeping Medal, and now the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, is presented him with the citation. श्री वरुणेंद्र प्रताप सिंह, सेकंड इन कमांड। श्री वरुणेंद्र को यूएन मिशन के दौरान सराहनीय कार्यों के लिए यूएन पीस कीपिंग मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। He is also an awardee of the UN Peacekeeping Medal. The Honorable Vice President presenting him with the medallion and the citation श्री for वरिंदर कुमार, सेकंड इन medal कमांड, for इलेक्ट्रिकल। meritorious service. Shri Varinder Kumar, who is the second in command electrical of the Border Security Force, is now being presented with the meritorious service medal for the police by the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. और अब उत्कृष्ट सेवाओं के लिए श्री शिव कुमार शर्मा, डिप्टी कमांडेंट, जो कि उप कमांडेंट है, माननीय उपराष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करते हुए And shows this is always a very proud moment when a serving person, especially those who wear the uniform, it's indeed a proud moment when their services are श्री recognized यतेंद्र सिंह by नागर, the डिप्टी कमांडेंट। organization and also by the nation. बिल्कुल, और उनके परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं। वो इस गौरवशाली क्षणों का आनंद लेते हुए जब उनको उनका शौर्य और पराक्रम के लिए अलंकृत किया जा रहा है। Absolutely. And the Border Security Force is one force which spends most of its time श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कमांडेंट। harsh climatic conditions, whether it is the border areas of Rajasthan and Gujarat where temperatures soar to above 45 degrees in the summer, or the borders of Jammu and Kashmir and Ladakh where the temperatures dip to -20 in winters. The men and श्री officers जितेंद्र सिंह खटक, of डिप्टी कमांडेंट, Seema पीपीएस। Suraksha Bal really dedicate themselves to securing our frontiers and also ensure that all Indians stay safe. And this is a moment when the organization, that is the Border Security Force, and also the nation remembers their services, their sacrifices, and honors them. श्री यशपाल सिंह चौहान, डिप्टी कमांडेंट। सुरक्षा बल का काम बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा करना है शांतिकाल के दौरान। इसके अलावा इनका जो मुख्य काम है वो अपराधों की, जो तस्कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनकी भी धरपकड़ करते हैं और शांतिकाल में उस वक्त सीमाओं की रक्षा भी करना इनका मुख्य कार्य है। And of course, this is also श्री चंद्रदीप राय, असिस्टेंट कमांडेंट great वर्क्स। moment for all the awardees here, as we now hear that so many of the awardees have also been presented with the distinguished services for peacekeeping when they were on United Nations mission. So this also speaks volumes about their capabilities and their belief in Vasudhaiva Kutumbakam and their live up to the motto of Inspector one Communication family, Ajit one Singh, future, which is the motto of India's G20 presidency. माननीय उपराष्ट्रपति सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें, सराहनीय सेवा पुलिस पदक उन पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है जिनकी सेवा का रिकॉर्ड निरंतर उत्कृष्ट रहा। Absolutely. And this is also shows an outstanding moment in the lives of all these men सब and इंस्पेक्टर personnel एस नंद of कुमार। the Border Security Force. उपनिरीक्षक जनरल ड्यूटी एस नंद कुमार अपना पदक माननीय उपराष्ट्रपति से प्राप्त करते हुए और साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति ने प्रशस्ति पत्र दिया।
And another aspect, Shoaib, is that today many retired सब इंस्पेक्टर personnel रेडियो of, ऑपरेटर कार्तिक चंद्र रॉय, BSF will also be honored with the Distinguished Service Awards. Karthik Chandra Roy, radio operator, and he is a deputy director and is being presented with the Police Medal for Meritorious Service by the Honorable Vice President of India. And Shri Karthik Chandra Roy is answering the queries of the Honorable Vice President. सब इंस्पेक्टर presenting a राजेंद्र सिंह, smart salute, and he is now departing from the dais. माननीय उपराष्ट्रपति इन सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो सीमा सुरक्षा बल के हैं वीरता पदक और स्कॉल प्रदान करते हुए आपको बता दें कि विज्ञान भवन के इस मुख्य सभागार में सीमा सुरक्षा बल का 20वां अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त माननीय सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इन सभी पुलिस पदकों से सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित कर रहे हैं। Sub Inspector Vikram Singh being presented with the Police Medal for Meritorious Service by the Honorable Vice President. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर छेतीलाल मिश्रा, सहायक निरीक्षक छेदीलाल मिश्रा को उनके सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति ने उनको पदक प्रदान किया और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति इनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य और यहाँ उपस्थित बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कृष्ण लाल, इस समारोह में इनकी सेवाओं को सराहते हैं। The Honorable Vice President pinning the medallion onto the uniform and presenting the citation to Head Constable Krishna Lal. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, Assistant Sub Inspector Narendra Singh of the BSF now being presented with the Police Medal for Meritorious Service by the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. And there's a round of applause here at the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the officer असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार विश्वास, presents a smart salute to the Honorable Vice President of India. माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा पदक प्रदान किया जा रहा है और ये गौरवशाली क्षण जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति इन अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत भी करते हुए पदक के साथ साथ जान रहे हैं उनके योगदान के बारे में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह, Assistant Sub Inspector Avtar Singh presenting a smart salute to the Honorable Vice President of India, and the Honorable Vice President congratulating the awardee and presenting him with the Police Medal for Distinguished Service. कांस्टेबल मकान सिंह, और अब कांस्टेबल मकान सिंह माननीय उपराष्ट्रपति से अपना पदक प्रदान करते हुए, माननीय उपराष्ट्रपति ने पदक प्रदान किया, उनके सीने पे ही पदक लगाया और अब प्रशस्ति सराहनीय कांस्टेबल वॉशरमैन राम जिनीश बैठा, विज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है। And all ranks and all trades of the Border Security Force have been presented with various awards by the Honorable Vice President of India, and this is a proud कांस्टेबल वाटर moment कैरियर for नरेश प्रसाद सिंह, all the men and officers of Border Security Force today. नरेश प्रसाद सिंह जो कि कांस्टेबल है, अपना पदक माननीय उपराष्ट्रपति से प्रदान करते हुए और
साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति ने आपको प्रशस्ति दी। अब जो सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे वे हैं सेवानिवृत्त सदस्य को, जो कि और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों व सीमा प्रहरियों में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने सबसे पहले आ रही हैं श्रीमती मर्सी थॉमस डेनियल, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिटायर्ड। And also a great moment for these retired officers and personnel of the Border Security Force. The Administrative Officer retired, Srimati Mercy Thomas D, is been presented with the Sevanivritt Saraniya Sevaon ke liye Police Padak, that is the Police Medal for Meritorious Service. And indeed a proud moment for these personnel and officers who have served the force with dedication and valor. बिल्कुल अपनी सेवा के दौरान इनके द्वारा Vice President presenting the Shri Baljit Singh, Assistant Commandant Ministerial, retired. Shri Baljit Singh, Assistant Commandant, presenting a salute to the Vice President and is also receiving the Police Medal for Distinguished Service and the citation from the Honorable Vice President of India. Inspector Communication, retired, Ram Avatar. Inspector Ram Avatar also receiving the award post-retirement, and he has also rendered yeoman service to the force and is being presented with the Police Medal for Meritorious Service by Shri Jagdeep Dhankar, the Vice President of India. बिल्कुल कौशिक आप देख रहे हैं कि और सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड रमेश शर्मा उसी अनुशासन के साथ, उसी चुस्ती दुरुस्ती के साथ इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति से अपना मेडल प्राप्त करते हुए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान निभाई थी। And as the BSF motto goes, Jeevan Paryant Kartavya, that is duty or Kartavya, as we know, is the supreme duty towards our organization and our nation, and they have dedicated. Thank you, sir. Thank you very much. और अब माननीय nation. मुख्य अतिथि महोदय रुस्तम जी स्मृति And व्याख्यान now से the अपने Honorable आशीर्वचनों Vice President of से हम India, सभी को Shri अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। Jagdeep Dhankar will माननीय present the Rustamji Memorial Lecture 2023. Shri Khusro Faramurz Rustamji, KF Rustamji, Indian Police, was the first chief and founding father of the Seema Suraksha Bal or the Border Security Force. और अब माननीय उपराष्ट्रपति जी रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान के लिए Very warm greetings to everyone. I have no hesitation in indicating, and it is subject to medical assessment, I stand surcharged, energized, motivated, and inspired when I greeted these heroes. Each one of them reflected sublime commitment and nationalism, which we all need to emulate. Dr. S.L. Thausen, DG BSF, Sri P.V. Ramasastri, ADG BSF, and I find in the audience very distinguished people. But I find that there is a category of retired DGPs. They are not tired. None of them is tired. And this is
out of personal experience. I have seen many of them. Some of them, even before I took oath of office of Governor, State of West Bengal, on 30th of July 2019, earlier to that, and thereafter also. We'll have to find out what is that so very special in the BSF that DGPs never get tired. I'll come to that later on. I recognize, and pardon me if I make an omission, I'm bound to make. Shri Pankaj Singh, Deputy NSA, had the good fortune of being side by side with him while he was heading the BSF in the state of West Bengal and thereafter at the central level. Sri Vikram Misri-ji, I do not know him personally, but I know enough of him and I greatly admire him. Lieutenant General M.V. Sachinand Kumar, Vice Chief of Army Staff. Sir, my salutations as Sainik School 166, Sainik School, Chittorgarh. Shri Anish Dayal Singh, DG ITBP. Shri Sheel Vardhan Singh, DG CISF. Shri Atul Karwal, DG NDRF. Shri Arvind Kumar, Vigilante Commissioner, former Director IB, and one with whom I interacted on every aspect and several times, Shri Rajiv Jain, and for a long time. Distinguished officers, everyone present in the audience, and the entire human resource of BSF, their families, the veterans, ladies and gentlemen. I'm extremely happy and delighted to be associated with the 20th investiture ceremony of brave men and one woman. When I say one woman, I go back to what Disraeli, a Prime Minister of Israel, once said. The only man in my cabinet is a woman. He was making reference to Golda Meir. How thoughtful of the BSF to have that film. The film is a ground reality. The film focused on the growth of our woman power, their contributions, and it exemplifies incremental fruits of Beti Padhao. And I would say Beti Padhao gives rise to blossoming of democracy, growth of economy, and balance of societal behavior. Those who exemplify their work by such conduct have to be ever respected and well regarded. The investiture ceremony is a momentous occasion to recognize valor, honor, and exceptional contributions. When I interacted with each of them, they are drawn from all over the country. One of them was from Sainik School. Instant connect with me. Congratulations to them, their parents, their families. They have made all of them very proud. To honor deserving individuals engaged in public service is our obligation, and we should be discharging it as often as possible. राष्ट्र के प्रहरियों को मेरा नमन। थार का तपता मरुस्थल हो,
and imagine the conditions there. कच्छ के रण का दलदल हो, I have been there. कश्मीर की बर्फीली चोटियां हो, and those चोटियां at the moment are seeing global warmth, presence of global dignitaries, a changing profile of this country, and the world is looking at the big change that is taking place. या फिर पूर्वोत्तर भारत के घने जंगल, इन सब परिस्थितियों में, in extremely trying conditions of weather and challenges of all kind, one category is functional 24/7, and that is our BSF. आज मैं बल के सभी बहादुर जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए नमन करता हूं। भारत को सीमा सुरक्षा बल पर नाज है। But what is more important, the credit goes to their families. They are the spinal strength. They sustain their morale. We must always be in ever salutation of these families who contribute human resource to BSF that allows us to have sound sleep. Honored to be with those who are associated as guardians of our frontiers. And look at their motto. The motto says it all. जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इस वाक्य को बीएसएफ के हर व्यक्ति ने हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में और सब कुछ निछावर करने के बाद भी चरितार्थ किया है। मैं उनको नमन करता हूं। I salute their passion, commitment, devotion to duty in realizing their mission, which is ultimate essence of our nationalism. Raised under the charismatic leadership of Sri K.F. Rustamji, BSF has now evolved into a modern, disciplined, and capable force. It is an honor for me to deliver Rustamji Memorial Lecture 2023. I belong to legal profession, which means I was in the company of jealous mistress. A legal profession is known. The jealous mistress came to an end when I became Governor State of West Bengal. But then that gene is always there. So when I look at Rustamji, what a change he catalyzed in the world of law. Such historic, memorable milestones generated by that great person is one of the most significant. Soothing movement was protection of human rights. After he had structured many organizations, this he focused. The man who set up the Border Security Force, he also laid the firm foundations, very firm, and the foundations have now culminated, crystallized into Badi Imarat, public interest litigation. It was he who initiated public interest litigation in the Indian judicial system. The National Police Commission, this was the first of its kind. The need for National Police Commission was felt because the largest democracy on the earth was visited in 1975 with the dark era of emergency. That saw large-scale human rights violations, debacle of institutions, something which founding fathers of the Constitution never imagined.
a period which we all would like to forget. Large number of people were put behind the bars. They had no access to judiciary. So when there was turn of events politically, National Police Commission came into being. And this National Police Commission had an important component, and that was in the shape of Rustamji. He was one of its glorious members. It came to be headed by a gentleman whom I remembered every moment I was Governor State of West Bengal, because Dharamviraji adorned that august office as Governor State of West Bengal. I could never rise to his level of commitment and dedication. But in together, these gentlemen created National Police Commission, which we greatly value. In that capacity, in 1978, Rustamji visited jails in Bihar, and he scripted their conditions. He was greatly moved, and he thought he would have to catalyze affirmative actions, because he came together that many of the prisoners were there in jails for a period which was much beyond the maximum punishment which could be accorded to them. And this led to Usandara Khatu versus State of Bihar. And ladies and gentlemen, one amongst you, founder of BSF, brought about human rights by one stroke to 40,000 under trials all over the country. What a feat attained by one individual. The moral of the story is that if an individual commits himself or herself to achieve something which is of wider impact for the society, it is attainable. I have always indicated the most dangerous human activity is to have a great idea and allow that idea to be harbored in your mind. That's the greatest injustice we do to humanity. If there is an idea, we need to act on it, irrespective of the result. Let us not have the fear of failure of that idea. No one has succeeded in the first instance. If there was no flight of imagination, ladies and gentlemen, Neil Armstrong would not have landed on moon. Things would have been very different. So never hesitated. Rustamji exemplified it in action. At that point of time, now we have social media. Now we have proactive judiciary. We are proud of it. Our judiciary is spinally so strong that confidence of the citizen is so high. But at that time, this mechanism was not there. He initiated it. I'll quote his reflections. He reflected, I quote, "How can such a situation exist in our country? We must do something about it," unquote. This was the idea. If he had kept quiet, there would have been quietus to the situation, and those people would have been languishing in jail. He acted. He tried and succeeded. I go a step further. Never hesitate to try. A failure is only a step that someone else will take up the baton. A passionate nationalist, Rustamji wrote extensively on minority rights of Hindus at that point of time, and Muslims, and viewed the fact that his journalistic writings were not acknowledged.
you all are gifted more than I am. You know, sometimes recognition to a person comes when he has met his maker. So it is recorded in history. Every word which Rustamji said reverberates in our ears now, sensitizes our mind and attitude. He was Chief of Madhya Pradesh Police, as I said, DG BSF, and was the first Chief Security Officer of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, and for a long time of 6 years. Maintaining a diary is a tough challenge. It has given rise to so many cases. And those, they are not present here. Income tax people are extremely keen to get a diary. If they get one, they think it is a epicenter. Rustamji also maintained a diary. And he continued maintaining it for more than 3 decades. I am sure whatever is in public domain, he will focus on that. The man who was handpicked by none else than Lal Bahadur Shastri, who said, Jai Jawan, Jai Kisan, has created a force of which Bharat is proud and the world is aware. Rustamji, his exceptional qualities were reflected during 1971 Bangladesh Liberation War. He retired in 1974. As I said, was never tired, as I see everyone around here. As Special Secretary in the Ministry of Home Affairs, he structured the Indo-Tibetan Border Police, CISF, in the Central Police Organization. He initiated formation of the Indian Coast Guard. And what a magnificent organization is Coast Guard. Eastern part of the country is more prone to getting cyclones of very high intensity. And when I was Governor State of West Bengal, we had about half a dozen. I salute to the Indian Coast Guard. There was not a single death on the high seas during that period. That organization was created by the man. Conferment of the second highest civilian award came to him a little late, Padam Vibhushan, but it did come in 1991. I recollect my time then as a member of parliament and a union minister from 89 to 91. A befitting recognition and a rich tribute, well-earned tribute to his sublime service to the nation. He was born a Parsi on May 22, 1916, but as per his wish, he was cremated according to his wishes as per Hindu rituals in March 2003. He will always remain etched in our memories as a great leader, manager, strategist, writer, thinker, a police officer, and a humanist. Ladies and gentlemen, BSF saga does not end there. There is another gentleman, very vibrant, was your DGP, and he has taken the baton, and I would say to a higher level. This distinguished former DGP is passionately taking Rustamji's baton and torch to higher flights. I am making reference to none else than Shri Prakash Singh, a former BSF DG. Look at the commitment of the man, his passion, his mission, his devotion.
he is working to transform the police mechanism, to bring about police reforms. It was after 10 years he started the process on the judicial side in 1996. 10 years thereafter, in 2006, we had another significant judgment from the Supreme Court. The one we had was initiated by Rustamji. This one was in 2006, when a foundation was given to those in governance, how to allow police to function and to be in service of the nation in the best traditions. Such people are to be honored. They have to be saluted. I can betray my mind to you that as Governor State of West Bengal, when I had not known Prakash Singh Ji, I sent a word to him that governance is posing a challenge. And if the challenge emanates from the steel frame, if the challenge emanates from those in uniform, I need your guidance. He penned down a note which was so remarkable. And you will be happy to know, ladies and gentlemen, for the first time in the state of West Bengal, DGP came to be appointed as per Supreme Court verdict. The man initiated it. Several things have happened in the country because of 2006 judgment and the orders passed thereafter. Sovereignty and integrity of our country is inviolable. We all are committed to it. There could be no thought of ever compromising it. And we know it. The challenges which the BSF faces. The borders are porous. The borders are long. Unauthorized, illegal economic activity which, to those who do not believe in the nation, engage into sinister and pernicious activities, is financially rewarding. It's a tough challenge for the BSF to antidote those activities, neutralize them, combat them, contain them. And sometimes the challenges are not from the other side of the border. Sometimes the challenges are from this side of the border. I am so happy to share with you that BSF in the state of West Bengal, one of the gentlemen is present here, took to non-invasive, cooperative, harmonious approach, generating an ecosystem so that people participate. The activities of BSF for suffering Indians in crisis is too well known. Insurgency, Naxalism, they are being combated with the greater involvement of BSF. And for the country, if we take it on a point of record, what's largest border guarding force? India's first line of defense. National security is the cornerstone of our country's progress and prosperity. You know it more than I do of late. The developments that should have taken place earlier are taking place now. The kind of road infrastructure we have, the kind of technological involvement that is taking place, the kind of arms that our people are being made available, and the kind of facilities that are being created for the human resource. This is not an obligation to them. This is our due. It is satisfying and gratifying to note that the attention is being paid by the governance mechanism very seriously. सीमा सुरक्षा के साथ बीएसएफ के लोग नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को जब मिटाते हैं, पर्सन से काम करते हैं, उनके परिवार के ऊपर बहुत बीतती है. But they don't lament. They take
that they are working for the nation. ऐसी परिस्थिति में उनके हर प्रिजन को मैं सैल्यूट करता हूं, हमें उन पर नाज है। चैलेंजेस कितने आ रहे हैं, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसमें तो ह्यूमन के साथ साथ हमारी गाय माता को भी ले रखा है। कितनी बड़ी चुनौती है। मिस्टर पंकज सिंह विल रिवील समडे इन अ बुक कि कितने तरीके एडॉप्ट किए जाते हैं। दिमाग खतरनाक रूप से कहां तक जा सकता है, मैंने भी देखा है। बीएसएफ एंटीडोट करती है। I only wish that we have more rewarding ecosystem for them. I appeal to all state governments, particularly border states, to be extremely sympathetic, sensitive to border security force. They must take border security force in precedence to their own. The leadership of the border security force, and I can say without fear of contradiction out of experience, will never generate a system other than that of being in collaboration with the state governments. I appeal from this platform, executive leadership of all state governments, to take all affirmative steps, sensitize their mechanism, so that morale of the BSF is ever sustained high. The length, porosity, and complexity of border makes patrolling very difficult. I have seen in the film, this is being done by our girls also, excellently. But it's very difficult. Sophisticated mechanisms are being employed both sides. We have to be extremely careful. But I am happy. I will not reflect on the attainments of the BSF on these things by intercepting these aspects which are used as fiscal gain mechanisms is remarkable. On a point in 2022, BSF seized 300 kilograms of heroin, over 10,000 firearms, and cattle in thousands. I know the problem they face. They seize, they expect to be rewarded, their problem starts. From that point of time, someone has to take care of the cattle. Surely BSF seizes them, can't take care of the cattle all the time. I worked very hard in that capacity to generate a mechanism. Others are working. The challenges that BSF faces, its efficiency will go up if citizens take it upon themselves to be an extension of BSF, to be supportive of BSF. Ladies and gentlemen, we are at a time in our country, in Amrit Kal, when India is on the rise as never before. The rise is unstoppable. The incremental growth trajectory will ever go high. By the time we reach 2047, Bharat will be a global leader. Just a decade ago, we were 11th largest global economy in the world. In September 2022, we had the distinction of being the 5th largest global economy and overtaking our erstwhile colonial rulers. By turn of the decade, we will be 3rd largest. If I focus on
contemporaneous economic scenario, in 2022, our digital transfers were more than US, UK, France and Germany by 4 times. 4 times. This is because our borders are secure. All this will go on a tangent if borders are not secure. If we see the 700 million internet users we have, our data consumption is more than China and US per capita, China and USA taken together. It's a silent revolution. और ये क्यों संभव है? इसका एक प्रमुख कारण है जो सीमा पर कठिन परिस्थिति में प्राण प्रण से देश की सेवा करते हैं 24/7। उनसे कोई चूक होगी, ये गड़बड़ा सकता है। तो इनकी एक्टिविटी आप लोगों की इज मच बियॉन्ड सिक्योरिटी। Security is integrated, intertwined in economic development, peace and harmony. And therefore, you are really engaged by your unwavering commitment, self-service and sacrifice in taking care of the holistic growth of the nation. I would leave a thought with all of you. Because you are practicing it. You are practicing it day in and day out. You always keep nation first. Your personal interest always takes a backseat. This is not enough. Others must also magnetically learn from you. Make them aware of it. That if we are caring for the nation, we are caring for you. And therefore you must be upright in your commitment to the nation. भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के सभी जवान अधिकारियों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उन शहीदों के परिजनों के साथ हैं। I can tell you, as governor, I visited every household that lost a BSF warrior. Me and my wife both went there. I want every senior official, senior constitutional functionary to make it a practice. It is not solace to a family. It is solace to a category that is helping us survive the way we are. मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। I am grateful to DG BSF for affording me this rare, meaningful opportunity. I will ever cherish these moments. Jai Hind. Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, presented the Memorial Lecture 2023, and he recalled the courageous duty of the BSF personnel and their officers, and also paid tributes to the founding father of the BSF, Shri Khusro Faramurz Rustamji, KF Rustamji, of the Imperial Police, which later on became the Indian Police Service. And now Dr. Sujay Lal Hausen, the DG BSF, is presenting a memento to the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. माननीय उपराष्ट्रपति ने रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान दिया। और अब हम सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान के इस वर्ष की श्रृंखला के समापन की दहलीज पर हैं। अब आइए एक बार फिर हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान होगा कार्यक्रम के समापन में।
And the national anthem was presented by the BSF band, and the Honorable Vice President is now being escorted by the DG BSF and the additional DG BSF, and he is coming down to meet the veterans of the service. And this is indeed a momentous occasion. Shows the Honorable Vice President has come down from the dais and he is doing namaskar to all the veterans who had served the BSF and other Central Armed Police Forces. And what a proud moment indeed, the Honorable Vice President reaching out to the veterans of India who have guarded our borders and have given us security. And as he very rightly pointed out that today India is the world's fifth largest economy, and by the end of this decade we would be the third largest global economy, and that is only possible because our borders are secure, and forces like the Border Security Force toil day in and day out 24/7 in the name of duty towards the nation. As a Prahari or a constable of the force has said, परिंदे भी लौट आते हैं अपने घोंसलों में, हमारा बसेरा तो सरहदी फिजाएं हैं. And this indeed shows, captures the feelings that the force has towards our country. And the Honorable Vice President doing namaskar to all the other people who are present in the plenary hall of the Vigyan Bhavan, and he is now departing from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And everyone who is present here, it has been a momentous occasion. The Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, escorted by the senior officers of the BSF, has now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ विज्ञान भवन के मुख्य सभागार से प्रस्थान करते हुए, आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल का 20वां अलंकरण समारोह विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जिन्होंने अलंकरण समारोह में वीरता पदक और स्क्रॉल प्रदान किया, साथ ही रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान भी प्रस्तुत किया। इस विशेष प्रसारण से सिर्फ इतना ही। मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय, तकनीकी टीम के हमारे सहयोगी अशोक कुमार मिश्र और बाबूलाल मीणा और कार्यक्रम प्रभारी विवेक कुमार तोमर और प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हो रहे सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण दे रहे थे एसवाई खान और कौशिक रॉय।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। Chön tarız thay mön tarız इकवट बनिए सन तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই সুর। তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই সুর। সৃষ্টি হো কই তান। तुम मोरा स्वरर मिलन सृष्टि करी चालू च्योतान। મળે સુર જો તારો મારો બને આપણો સુર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आकाशवाणी का जॉइंट वेंचर मतदाता जागरूकता और वोटर्स राइट्स पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रायोजित कार्यक्रम मतदाता जंक्शन 23 भाषाओं में देश भर में आकाशवाणी नेटवर्क पर 42 FM विविध भारती, 25 FM रेनबो, 4 FM गोल्ड, साथ में प्राइमरी और लोकल रेडियो स्टेशंस पर हर शुक्रवार जुड़िए मतदाता जंक्शन से आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India and Australia today signed agreements in the field of migration and mobility partnership and on green hydrogen task force. The memorandum of understandings were exchanged after a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese in Sydney. In a joint press statement after the meeting, Prime Minister Modi said the India-Australia ties are based on mutual trust and confidence. Mr. Modi said they have constructive discussion on strengthening strategic cooperation between the two nations. He added that the discussion was held on taking India-Australia comprehensive strategic partnership to new heights. Mr. Modi invited Prime Minister Anthony Albanese and all Australian cricket fans to India for the Cricket World Cup this year. The Prime Minister also said he had discussion with his Australian counterparts in the past on the issue of attacks on temples in Australia and activities of separatist elements, and the matter was also discussed. He added they will not accept any elements that harm the friendly and warm ties between the two countries by their action or thoughts. ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के
सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। The Australian Prime Minister said the two countries reiterated their shared ambition for an early conclusion of the Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement later this year. He also announced the establishment of a new Australian Consulate General in Bangalore, saying it will help connect Australian businesses to India's booming digital and innovation ecosystem. President Draupadi Murmu today visited Devghar and offered prayers for the well-being of the citizens of this country at the Baba Baidyanath Dham Temple, one of the 12 Jyotirlingas in India. The President was accorded a warm welcome by Governor C.P. Radhakrishnan, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal and BJP MP Nishikant Dubey and senior bureaucrats at Devghar Airport on arrival. After offering prayers in Devghar, the President left for Ranchi. She will garland the statue of Paramveer Chakra awardee Albert Eka in Ranchi and hold talks with people from tribal community at the Raj Bhavan. The President is on a 3-day visit to Jharkhand to inaugurate the new building of Jharkhand High Court. She will also preside the second convocation ceremony of IIT Ranchi in Namkum. Tomorrow, President Murmu will also grace the conference of more than 500 women self-help groups organized by the Tribal Affairs Ministry at Khunti. Madhya Pradesh government is announced to legalize more than 6,000 illegal colonies in the state. Addressing a program, the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan said that illegal colonies which came into existence till the 31st of December 2022 will be legalized. The Chief Minister also announced that basic facilities including roads, electricity, water, drainage will be provided by the civic bodies and panchayats in these colonies. He said the residents of these colonies will not even be charged the amount of development fee. The Chief Minister also announced that food will be provided to the poor and labourers in urban areas for 5 rupees. India Meteorological Department IMD has forecast wet spell over northwest part of the country due to an active western disturbance till the 26th of this month. Light to moderate rainfall at most places with thunderstorm, lightning and occasional gusty winds is very likely over western Himalayan region over the next 2 days. Rainfall at many places with thunderstorm, lightning and occasional gusty winds is very likely over plains of northwest India. Mumbai Indians will lock horns with Lucknow Super Giants in the eliminator of the IPL in Chennai today. The team that loses the first qualifier gets another chance to qualify for the final by facing the winners of the eliminator in the second qualifier. The winner of this match will face the winner of the first qualifier in the final on Sunday. Yesterday, first qualifier Chennai Super Kings beat Gujarat Titans by 15 runs to enter the final. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत